रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. This is today's topic, settlement of single pi. So far we have done load carrying capacity of single and pile group in clays and in sand. Today we would finish this chapter, rather the whole course, settlement of single pile. So of predominant type of settlement in single pile is the immediate settlement or elastic settlement. Consolidation settlement contributes very less, is of the order of 15% of the total amount of settlement, and generally it is not calculated, rather some percentage may be added to the total settlement. So let's discuss the immediate settlement or elastic settlement. This is the equation for elastic settlement. SE is equal to SP plus SS over SSP. Three components come together to contribute to the immediate settlement. The SP, the first component is SP, which is elastic deformation of pile shaft. The pile, when load comes on the pile, the shaft of the pile itself elastically get compressed. So that component is called SP. SS is the component of the settlement caused by load transmitted along the pile shaft. जो स्किन फ्रिक्शन है, जो कि सॉइल को ट्रांसफर होती है, उसकी वजह से जो सेटलमेंट आती है स्किन फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, उसको एसएसएस कहते हैं। और एसबी जो है ना, वो इन बेरिंग फोर्स की वजह से जो सेटलमेंट होती है, जो कि इन बेरिंग एरिया है, जो सॉइल है, वो जब सेटल होती है बिकॉज ऑफ द इन बेरिंग फोर्स, उसकी वजह से जो सेटलमेंट होती है वो एसपी है। तो आपके पास एसपी, एसएस और एसबी, इनको कैसे मालूम करते हैं? हाउ वी कैन फाइंड देम सेपरेटली? एसपी इज इक्वल टू एसबीए प्लस क्यूएसए into alpha S, L length of the pile, area of the pile, and elastic modulus of the pile. What is QBA and QSA? These are the actual loads, not allowable loads, rather actual loads or applied loads in the end bearing and in the skin friction. Okay? Whatever load you have applied on the top of the pile, like there in the diagram, look, this is the QA applied load. Okay, na? This is the resistance offered by the skin friction QSA, and this is the resistance offered by QBA. If QA is 0, for example, QSA would be 0, QBA would be 0. No settlement there. Okay, na? So QA is the applied load. And this is the resistance to the applied load offered by skin friction, resistance to the applied load offered by the end bearing. Or alpha is a coefficient you can find from here. Alpha value is 0.5 if you assume that skin friction is distributed uniformly. But if the skin friction is distributed parabolically, again it is the same 0.5. But if the skin friction distribution along the pile length is triangular, then psi would be 0.67. So this way you can find, if you know QBA, if you know QSA, and you
to select L5s from the skin distribution pattern, L, A, P, E, P you already know, then you can find SP. अच्छा जी, SSS जो the skin friction की वजह से जो लोड ट्रांसफर होता है उसकी वजह से जो सेटलमेंट आती है वो क्या है? Then QSA is equal to SSS is equal to CS QSA L over QB. QB is the end bearing resistance. QB is the end bearing resistance. L is the pile length. QSA is the resistance, skin friction resistance to the applied load, and CS you can pick from the table. Similarly, SSB is CB into QBA. QBA is the end bearing resistance due to against the applied load. D is the diameter. QB is the end bearing resistance. So if you know CS and CB, you would find CB and CS from here. CB for different types of soils, for driven piles and bored piles, the ranges are given here. You can select a value of CB from here and then put in this equation the value of CB, you will find CS. When CB and CS are known, you can put them in these equation and can find the settlement. ठीक है ना? Any question? Any question? No, sir. अच्छा, क्वेश्चन होना चाहिए. क्यों? How you would know QSA and QBA? देखें, QB allowable is QBU over factor of safety. Ultimate end bearing resistance over factor of safety is QB allowable. QS allowable is QSU, ultimate skin friction resistance over factor of safety. अब QSA कैसे मालूम करेंगे? QBA is QB allowable over Q allowable into QA. QA is the applied load. This QBA is the one that you need in the equation, so you can find them here. QA is the applied load. QB allowable you can find. Q allowable you can find. QSA similarly is QS allowable over Q allowable into QA. From this equation you can find QBA and QSA, the only unknowns that were left. So this is how single pile settlement could be found. Here there is no example included, but I will include an example, a solid example on the single pile settlement, and I will post it in the group. Settlement of pile group. Very important. The settlement of pile group is greater than the settlement of a single pile. Why? Because of the here you see pressure bulb of a single pile and pressure bulb of a pile group. If piles are installed closely, they form a big bulb, pressure bulb. Also, the shear zones overlap. Therefore, the settlement of a single pile is less than the settlement of a pile group. So, how to find the settlement of a pile group? Very easy. Immediate settlement, let's first find it in clays. How to find immediate settlement in clays? Immediate pile group settlement.
Let's first find immediate settlement in clays. So SE you found for a single pile. SEG is the immediate settlement for pile group and is equal to SE is the settlement of a single pile multiplied by square root of B bar over B. ये B जो है ना B bar is the pile group की width है, width of pile group और ये bigger B जो है ना this is diameter of the individual pile. इसको D भी लिख सकते हैं, इसको B भी लिखा गया है. B इसलिए लिखा गया है कि it could be a square section pile. Consolidation settlement of a pile group. Consolidation settlement of a pile group is found using equivalent raft foundation method. What you do in this method, you convert the whole pile group into a pile raft foundation. And then you calculate consolidation settlement just like for a shallow foundation. No new technique is there, but first you have to change the pile group into an equivalent raft. How it is done, let me explain. Here you go. This is a pile group. And these dotted lines you see, this is changed into an equivalent raft. And a raft of this size is placed at a depth of 2L by 3. L is the pile length. So 2L by 3 is the depth of the pile raft. To find the width of the pile raft, use 1:4. 1:4. You say slope. This slope is at 1:4. Here. And from here 1:4. Wherever it comes, you join it, and that would be the width of the foundation. Once you get this raft foundation, forget about the pile group, and you carry out the settlement calculation, consolidation settlement calculation like for a raft foundation, and use slope 1:2 method for stress calculations. This is called equivalent raft foundation. Let's solve an example on this. Here, this is the solution of a problem. We have a group of piles, 25 piles, 5 rows, 5 columns. So 5 rows are shown, 1, 2, 3, 4, 5. 5 piles here and 5 piles, right? So there are 5 rows, 5 columns, total 25 number of piles. Achha. You have a stiff clay from top to the bottom, and this is 25 meter. Hole is 25 meter. This is hard stratum, but from this top to this bottom, it is 25 meter clay. Pile length is 12 meter. Pile length is 12 meter. This is 1 meter pile cap. Pile cap is 1 meter below the ground surface. So, and the load applied is 12,000 kilonewton.
अच्छा जी, center to center distance of the pile from one pile to another pile is 2 meter. So if this is 2 meter, center to center, from this center to this center, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 to 8 meter. 8 meter is the distance from the center of this pile to the center of this pile. ठीक है ना? तो outside to outside क्या हो जाएगा? You add half of the diameter of this pile and half the diameter of this pile. So diameter of the pile is 0.6 meter. ठीक है ना? तो आपके पास जो ये width आ जाएगी, पूरी width ये हो जाएगी 8.6 मीटर. अच्छा जी, अब equivalent raft, let's convert this into an equivalent raft. ये देखें, 2L by 3 is the depth of the raft. This is raft. This is raft. 2L by 3. So 2 into L is 12 meter. Divide by 3. 2L by 3 is equal to 8 meter. So from here to here it is 8 meter. Now what is the width of the pile equivalent raft? What is the width of the raft? So देखें 8.6 meter is this, from here to here. You add this portion and this portion. How to find this portion? If you come down by one step, you would horizontally, if you come down 4 steps vertically, you will horizontally move one step. ठीक है? So if you come down by 8 steps, you will move by 2 steps. ठीक है? तो 2 मीटर ये कर लें और 2 मीटर ये कर लें. ठीक है? तो ये आपके पास हो जाएगा 8.6 पर प्लस 12, 8.6 प्लस 4, तो आपके पास हो जाएगा 12.6 मीटर. इस पे समझ आ गई है how we found the width of the foundation? जी आज समझ नहीं आई ना, तो फिर बताएं ना. ये देखें, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इज 2 मीटर. ठीक है? फ्रॉम दिस सेंटर to this center 2 meter, from this center to this center 2 meter, 2 meter, 2 meter. ठीक है? तो आप देखें इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक आपके पास जो डिस्टेंस बनता है वो 2, 2, 2 और 2 8 मीटर बनता है. फिर
हाफ ऑफ द डायमीटर ये ऐड करें और हाफ ऑफ द डायमीटर ये ऐड करें तो ये हो जाएगा 8.6 मीटर, ठीक है ना, 8.6 मीटर आपके पास। यहां से यहां तक आपके पास 8.6 मीटर हो गया। ये देखिए ये डिस्टेंस कितना हुआ, 8.6 मीटर। यहाँ तक तो सर ये आ जाती है समझ, इसके बाद तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, खैर है, नो प्रॉब्लम, वो भी समझाता हूँ। 8.6 मीटर ये हो गया। अब देखें ये 1/4, अच्छा ये 8.6, ये भी 8.6 हो गया ना, अगर ये हो गया तो ये भी 8.6 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं what I am going to find is the width of the footing, ये भी आपके पास 8.6 मीटर हो गया। But it is that slow. 8.6 मीटर, ये भी 8.6 हो गया, ठीक है। This is the raft, right? This is the equivalent raft, right? This one. From here this is the equivalent raft. So the width of this equivalent raft, this is 8.6. Now you have to add this portion and this portion. So it's very easy. This portion is equal to vertical distance. First find the vertical distance. This 12/3. 2 into L is 12 meter divided by 3 is 3 is equal to 8 meter. So vertical distance is 8 meter. So this distance is 8 meter by 4 because look, so that is equal to 2 meter. Similarly, this distance is also equal to 2 meter. Okay, so the whole distance now from here to here, oh my God. From here to here is how much meter? 12.6 meter. 12.6। अब समझ आ गई है? यस सर, अब समझ आ गई है। यस अब क्लियर है सर। गुड। अच्छा जी, अब मजीद इस पे इसी पे मजीद काम करते हैं। अच्छा जी, नाउ यू आर लेफ्ट विद अभी आप what you can do, you can consider this as an raft. You can forget about these piles. You can forget about these piles.
इसको भी हटा दें। इसको भी हटा दें, पहले ही से हटा देते। आगे बस ये एक खूबसूरत आसान राउट आ गया है। और ये आपके पास ग्राउंड लाइन है। ये ग्राउंड लाइन, ठीक है ना। ये पाइल लेंथ था, मगर ये भी अब खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, ये पाइल राउट हो गया है। इस ये बराबर है, किसके बराबर था? 12 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर। डेप्थ ऑफ द राफ्ट 8 मीटर। साइज ऑफ द राफ्ट कितना था? 12.6 मीटर। इस पे जो लोड आ रहा है वो 12,000 किलो न्यूटन। ठीक है, 12,000 किलो न्यूटन। ये अच्छा, यहां पे आपके पास एक हार्ड स्ट्रेटम है। $25 मीटर टेक, यहां से यहां तक ये 25 मीटर बताया गया है कि ये 25 मीटर है। From here to here. Oops. From here to here. It is shown to be 25 meter. अच्छा, एक गलती हो गई है। ये ग्राउंड लाइन जो है ना वो ग्राउंड, एक गलती हो गई है। वो क्या हुई है? ये क्या है? देखें, ये 1 मीटर ऊपर है, ग्राउंड लाइन 1 मीटर अबव 12/3, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे करनी है, 1 मीटर अबव। तो आपके पास जो ग्राउंड लाइन बन जाती है वो अप है। ये तो पाइल कैप, यहाँ पे पाइल कैप है, चलिए लिख लेते हैं। ये पाइल कैप, पाइल कैप यहाँ पे आ रहा है। पाइल कैप यहाँ पे आ रहा था। ग्राउंड लाइन जो है ना वो 1 मीटर अबव है। वन मीटर अबव, ये 1 मीटर अबव। तो 1 मीटर, 8 मीटर, ये 9 मीटर हो गया। और ये टोटल 25 है। तो आपके साथ क्या डिस्टेंस रह गया है यहां से यहां तक? 16 मीटर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 मीटर। ये ठीक है, यहां तक आपके पास ये हो गया है। मैं इसको सेव कर लेता हूं।
अब आते हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी सॉल्व है, अभी आपको समझ आएगी, ठीक है ना। ये 16 मीटर ये इक्विवेलेंट ड्राफ्ट है। 16 मीटर डिस्टेंस को यू डिवाइड इनटू 4 लेयर्स ईच 4 मीटर तक, और ये ग्रीन ये इसके सेंटर्स हैं, और इसको 1 2 3 4 पॉइंट्स किया, ठीक है ना। अब हम कंसोलिडेशन सेटलमेंट वी वुड फाइंड फॉर फर्स्ट लेयर, फॉर सेकंड सब लेयर, फॉर थर्ड सब लेयर एंड फॉर फोर्थ सब लेयर एंड ऐड देम अप, ठीक है ना। तो लेट्स फोकस ऑन दी फर्स्ट लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर DHC कंसोलिडेशन settlement is DHC1 consolidation settlement of the first sub layer, second sub layer, third and fourth. पहले पे आते हैं DHC1 सिर्फ मैंने मालूम किया है, ठीक है ना। फर्स्ट लेयर सब लेयर की सेटलमेंट कैसे मालूम करेंगे? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इन द सेम वे। So first of all you find effective overburden pressure at mid depth of the sub layer 1. तो ये mid depth है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रेशर आ रहा है, इस पे देखें, ये पूरा प्रेशर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज 9 मीटर, और ये आपके 4 मीटर है, तो इसका हाफ 2 मीटर हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, 9 + 2 = 11 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर ये वाला डिस्टेंस हो गया, 8 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। और 4/2 आपके पास सारा मिलके 9 मीटर हो गया, सॉरी 11 मीटर हो गया। 9 is the effective unit weight of the soil. So gamma into Z, gamma prime to Z is 99 kPa. This is sigma naught prime at mid depth of layer, 99 kPa. अच्छा जी, अब आप मालूम करें overburden, pre-consolidation pressure. Pre-consolidation pressure is it is given 1.4 times of effective overburden pressure. 1.4 into 99 is this, ठीक है। अब आप मालूम करें डेल्टा एस, इंक्रीज इन स्ट्रेस, डेल्टा सिग्मा एट 0.1। तो स्लोप टू 1 मेथड इस्तेमाल करेंगे। Q BR plus Z. BR is the width of the equivalent raft plus Z is the distance from the base of the raft to the center of the first layer square. So इससे आ जाएगा 56.3 kP. CR is 0.1 times of CC and CC is 0.7, it is given. So CR is 0.07. Put all these values in the consolidation settlement equation of CR and CC, you will get DH1. Similarly, you get DH2, DH3 and DH4. ठीक है ना। चलें DH4 भी कर लेते हैं। DH4 मैं आपके लिए कर लेता हूं। ये तो इमेज है, इसको ओपन विद क्या करना है। अच्छा ना, DH4 कैसे करेंगे? यहाँ पे ये डाउनलोड कर लेते हैं, चलें। यहाँ पे डाउनलोड हो गया सर।
सिंगल लैपटॉप, सिंगल लैपटॉप फिर नहीं करें। अच्छा ये डी अच्छा DH4 मालूम करते हैं। अच्छा सबसे पहले सिग्मा नॉट प्राइम मालूम करें। सिग्मा नॉट प्राइम किसके बराबर होगा? इफेक्टिव यूनिट वेट इनटू डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द बॉटम। तो क्या होगा? यहां से यहां तक क्या है? 25 मीटर। तो सेंटर तक क्या होगा? सेंटर तक क्या डिस्टेंस होगा? सेंटर ऑफ द पॉइंट 4 23। तो ये 23 हो गया। इससे क्या आता है? 207। अब दूसरी चीज जो मालूम करनी है वो SP प्राइम है। वो किसके बराबर होगी? वो 1.4 टाइम्स ये गिवन है ऑफ 207। तो ये क्या हुआ? इससे क्या आया? 289.8। सर 289.8। फिर आपके पास आ गया डेल्टा सिग्मा इंक्रीज इन स्ट्रेस विच इज QBR प्लस Z²। तो Q आपके पास है 12,000, BR आपके पास जो राफ्ट की जो विड्थ है वो 12.6 है, प्लस Z is the distance from the base of the raft to the center of the लेयर 4। तो क्या है सेंटर ऑफ लेयर 4? तो देखिए यहां से यहां तक 16 मीटर था, आपको याद है ना, और 2 मीटर हटा दें तो क्या आता है? 14। चल रहा है ना 14। इसे और इसका स्क्वायर लें, इसे क्या आता है? 14। स्क्रीन कर लेते हैं ताकि इसे क्या आ जाता है सराजी बच्चे? 16.9। अब इस देखें, इससे पहले ये आ रहा था, कितना आ रहा था? 56.3 kPa। अब आ रहा है 16 में, बहुत कम हो गया है। वजह क्या है? जितना आप राफ्ट से नीचे जाएंगे अप्लाइड स्ट्रेसेस जो है ना, इंक्रीज इन स्ट्रेस ड्यू टू लोड, कम होते जाएंगे। ठीक है ना? अब यू कैन अप्लाई DH4 इज इक्वल टू CR, और CR आपके पास है 0.07 डिवाइड बाय 1 प्लस E0। तो E0 आपके पास है 1.5 गिवन। तो 1 प्लस E0 आपके पास 2.5 हो गया इनटू H0। H0 is the thickness of the sublayer which is 4 meter, which is 4 meter 4।
into log 10 का सिग्मा पी ओवर सिग्मा नॉट, तो वो रेशियो 1.4 है। सिग्मा पी ओवर सिग्मा नॉट इज 1.4, और अगर आप पूरा लिखते हैं तो लिख लें, उससे भी 1.4 ही आएगा। सिग्मा पी आपके पास है 289.8 डिवाइडेड बाय 207 प्लस CC which is 0.7 divided by 1 plus E naught is 2.4 into H naught is 4 meter into log sigma naught prime plus delta sigma आएगा, तो sigma naught prime is this plus delta sigma is 16.9 divided by sigma naught prime, ये आ गया आपके पास। इससे जो आता है वो आप यहां लिख लें। ये हो गया आपका। समझ आ गई? अब समझ आ गई? अब समझ आ गई? यस सर। यस सर। प्रॉब्लम पे समझ गए? यस सर। अच्छा, सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप इन सैंड, ये क्लेमेंट ऑफ सैंड में, तो इसका भी एक आसान इक्वेशन वही है, इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप। लेट मी increase the size. Elastic settlement of pile group is equal to SC of a single pile, B square root of B over B. ये कैपिटल B is the diameter of the pile and B bar is the width of the pile group. इससे मालूम कर सकते हैं। या और दूसरा इक्वेशन ये है जिसपे हम अभी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। 2P SG pile group settlement in sand is 2P under root B bar I over N bar. तो इसमें P is the stress, net stress in ton per square foot due to load जो काज करती है, लोड ओवर पाइल कैप की जो डायमेंशन है वो। B bar is the pile group की width है। I is a factor which is this df over 8b bar. df is the depth of pile in sand, जो कि अगर पूरा सैंड हो तो ये लेंथ ऑफ द पाइल के बराबर हो जाता है। It has to be greater or equal to 0.4 but can't be less than 0.5. ठीक है। n bar is the average of the SPT count below the pile base. How much below? Equal to the B bar. Equal to B bar. The average corrected standard penetration test values in blows per foot within the sheet of settlement, which is roughly equal to B bar in homogeneous soil. तो इस एग्जाम्पल करते हैं, एक सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। Here you go. A pile group consisting of 9-12 inches pile, एक फुट डाया वाले 9 piles हैं। There are 9 piles, 3 rows and 3 columns. Steel piles driven 4 feet center to center. Center to center distance है 4 फुट। 30 feet into sand. Length of the pile is 30 feet. ठीक है। और सेटलमेंट मालूम करनी है पाइल की।
ये आपके पास सिंगल पाइल है, 1 फुट इसका डायमीटर है और 30 फीट इसकी देखें लेंथ है और ये मुख्तलिफ सॉइल लेयर से होके गुजरता है। ये इसके एसपीटी काउंट्स है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व एग्जांपल। पहले बी बार मालूम करते हैं। बी बार क्या होगा? अगर ये 9 पाइल्स हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो बी बार किसके बराबर होगा? जी कोई बता सकता है? देखें 1 फुट के 3 पाइल्स हैं, दरमियानी फासला 4-4 फुट है। ओके, दरमियानी फासला 4-4 फुट है। तो यहां से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस हो जाएगा? 4 फुट और 4 फुट 8 फुट हो गया और हाफ डाया ये हो गया, हाफ डाया ये हो गया, तो आपके पास 9 फुट हो गया, 9 फीट। ये 1 फुट का है ना, तो चेंज ये हो गया और चेंज ये हो गया 1 फुट। 8 जमा 1 9, तो बी बार आपके पास 9 फुट होगी। अच्छा इक्वेशन, अच्छा एन बी बार अगर आपके पास 9 फुट हो गया तो देखें यहां से 9 फुट नीचे आप जितना एसपीटी है उसको आप एवरेज लें, तो 12, 14 और 14 ये डिवाइड बाय 3, ये 13 इसका आपके पास हो गया लो काउंट्स। तो ये आपके पास इक्वेशन है 2p b बार i n। तो b भी आ गया, n भी आ गया, p और i रहता है। p जो है ना अप्लाइड लोड जो है ना वो 281 है, ठीक है। और b बाई b जो इसकी विड्थ है पाइल ग्रुप की वो 9/9, तो ये आपके पास 3.4 किस पर स्क्वायर फुट होगी। इसको टन पे आप चेंज करेंगे क्योंकि वो इक्वेशन टन्स के लिए एप्लीकेबल है, टन पर स्क्वायर फुट पे ये चेंज होगा। आई जो है ना उसका ये इक्वेशन आई DF 8B, DF आपके पास 30 फुट है तो आई की वैल्यू 0.58 होगी। ये सब यहाँ पे पुट करें, 0.5 इंच की सेटलमेंट आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास किलो न्यूटन और मीटर में हो लोड, किलो न्यूटन और मीटर में हो, तो आप फिर ये इक्वेशन इस्तेमाल करें, P in kPa, B in मीटर, ठीक है ना। तो SG आपके पास आ जाएगा इन mm। देखिए इस नोट्स में एक ये फॉर्मूला भी दिया गया है किलो न्यूटन और मीटर में। देखिए उसमें कुछ फर्क नहीं, ये 0.96 है और वहां पे 1 है, यहाँ पे 1 है। एक्चुअली ये इजाफी यहाँ पे आया हुआ है नोट में। इस पैराग्राफ को आप इस पैराग्राफ को आप हटा सकते हैं क्योंकि मैंने ये एक्चुअल फार्मूला 0.96 है, मगर 0.96 और 1 में कोई फर्क नहीं है, तो आप इसको हटा दें 0.96 को, तो यही इक्वेशन आपके पास आ जाए किलो न्यूटन और मीटर। तो ये पाइल ग्रुप सेटलमेंट इन सैंड। अब लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, पाइल लोड टेस्ट। पाइल लोड टेस्ट जब आप डिजाइन कर लेते हैं, व्हेन यू डिजाइन द पाइल, लेंथ ऑफ पाइल एंड डायमीटर ऑफ द पाइल आपके पास आ गया। In cases where the structure is critical or the soil is problem, you don't have much experience in that locality, then you would opt for a pile load test. You actually construct that pile of that length and diameter and apply the load till failure and see the verification of your calculations. If there is difference in your calculation and actual pile response in pile load test, you would revise your calculation and design. So that's called test pile, when you load the pile till the failure. And in some localities where you have some experience, so and you don't want to use test pile, because if you use test pile to and fail it and test it to failure, you cannot reuse it. It is lost because you have failed the soil. Test on a working pile
ये ऐसा है कि आप उस फाइल को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू डू नॉट टेस्ट इट टिल फेलियर, रादर यू टेस्ट इट टू द ट्वाइस ऑफ द डिजाइन लोड. अगर इफ यू हैव अ डिजाइन लोड ऑफ 200 tons, you test it to 400 tons. So what is the AST? There are different procedures. One is, which is commonly used, is the maintain load test procedure. ठीक है, आप क्या करते हैं? You apply the loads on the pile, on the test pile in increments. 25% of the load, design load, 50% of design, then 75%, 100%, फिर 125%, 150%, 175%, 200%, मतलब 2 times of the design load तक जाते हैं in increments, and maintain each increment of the load for about 2 hours, not more than 2 hours. हाँ, फिर आखिरी लोड जो है ना 200% वाला, that you maintain it for 24 hours. After this, you start unloading it in increments of 25%, और each increment को आप 1 hour के लिए छोड़ते हैं और इसको अनलोडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ तक कि मुकम्मल अनलोड हो जाए. फिर आप दोबारा रीलोड करते हैं, बट नॉट विद 25% इंक्रीमेंट, रादर 50% ऑफ द डिजाइन लोड, फिर 100% पर 150%, फिर 200%. Once you reach to 200%, you again start increasing the load by 10% of the design load till failure. तो ये इसका प्रोसीजर है. सेटअप का डायग्राम इस तरह होता है. देखें, ये आपके पास टेस्ट फाइल है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसके ऊपर ये जैक पड़ा हुआ है जिसपे आप लोड अप्लाई करते हैं. द जैक टू अप्लाई द लोड ऑन द फाइल नीड्स अ रिएक्शन सिस्टम जो उसको सपोर्ट कर सके, अदरवाइज जैक पर लोड नहीं अप्लाई कर सकता. तो ये आपने ऊपर सैंड बैग्स की सूरत में या कंक्रीट ब्लॉक्स की सूरत में इस गटर पे लोड रखा हुआ है, और ये गटर जो है ना इन सपोर्ट्स पे सपोर्टेड है. तो ये जो ऊपर आपने वेट बॉक्स और लिखा हुआ है जिसपे आपका कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं या सैंड बैग्स होते हैं, दैट लोड इज नॉट एक्चुअली अप्लाइड ऑन द जैक, rather they are applied on the supports. These loads only provide a reaction system to the upward motion of the jack, and in response the load is applied on the piles. These are the strain gauges, displacement gauges, which records the displacement. So what you do, you record the applied load versus displacement of the pile, and you draw the plot. Another setup is not to use the weights, rather anchored piles. So the center one is the test pile. The 2 piles on the left and right of the test pile are the anchored pile. So these anchor piles provide reaction system to the jack. ये jack है और ये displacement gauge है. ठीक है. The curve would look like this. You see, this is loading and this is unloading. This is application of the loads and steps. ये देखें, ये steps, ये टाइम है, x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे लोड है. तो टाइम के हवाले से देखें, आप इसको स्टेप्स के जरिए आप लोड अप्लाई करते हैं. एंड दिस इज सेटलमेंट, टाइम वर्सेस सेटलमेंट, और दिस इज लोड वर्सेस सेटलमेंट आपके पास का. आप इससे फेलियर लोड कैसे मालूम करेंगे? इस कर्व से फेलियर लोड कैसे मालूम करेंगे? देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स. द वन दैट आई हैव चोजन फॉर यू इज द सिंपलेस्ट वन. ये देखिए, ये आपके पास कर्व है. इस पॉइंट पे लोड Q1 है और सेटलमेंट है ST1, टोटल सेटलमेंट ST1. ठीक है, ये Q2 है, ये ST2 है. तो ये आपके पास टोटल सेटलमेंट का कर्व है. जब अनलोडिंग हो जाती है, दिस अनलोडिंग, यू सी देयर इज अ बिट रिबाउंड. दिस इज कॉल्ड इलास्टिक रिबाउंड. ये देखें, इलास्टिक हुआ है. स्प्रिंग को आपने प्रेस किया है, फिर छोड़ दिया है, तो देखिए ये अपनी जगह पे आ रहा है, मगर दैट विल नॉट कम बैक
to zero. Rather, there is some permanent displacement, which is plastic deformation, and this is elastic deformation. Okay? So what do you do? This is the total settlement, which includes plastic plus elastic settlement. You subtract from this total settlement the elastic settlement. ये subtract कर लेते हैं. इस तरह इस point के लिए भी from total you subtract the elastic settlement and you get the net settlement. Total minus elastic, you get the net settlement. So you plot actually the load versus net settlement, not the total settlement. आपके पास ये कर्व आ जाए. तो देखें ये क्यू यू आपके पास वो है जहां पे आपके पास कर्व की प्लंजिंग हो जाए या स्लोप उसका बदल जाए. देखें ये डायरेक्शन बदल गई है. तो ये आपके पास अल्टीमेट लोड ऑफ दी पाइप ग्रुप आ जाता है. एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज यकीनन बहुत है कि आपको सॉइल रिस्पांस मिल जाता है, मगर जिसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. एक ये कि टाइम लेता है, कॉस्टली है, ठीक है ना. और ये सिंगल पाइल रिस्पांस देता है, पाइल ग्रुप का रिस्पांस नहीं देता. दो कि आप पाइल ग्रुप को भी टेस्ट कर सकते हैं, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है ना. चलें, ये आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है. अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं. जी वीक हो, सॉफ्ट हो, लूज हो, फिल मटेरियल हो, मुख्तलिफ किस्म की आपके पास डिफिकल्ट सॉइल आ सकती हैं. Where shallow foundation would lead to shear failure or huge settlement, you opt for pile foundation. But there is an alternative way. You improve the soil through different techniques that we are going to discuss, and then you opt for shallow foundation. And you do some cost comparison, whether a pile foundation would be fine for you or shallow foundation with soil improvement would be okay for you, right? So here are different techniques of soil improvement. Vibro compaction or vibro flotation for medium dense sand deposits. एक बड़ा सा प्रॉब होता है जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है फिगर में. इसमें ये नोजल होते हैं जो कि बड़ी तेजी के साथ वाटर जेट को इमिट करता है, और इसकी अपना वजन भी बहुत होता है, और ये इमिशन भी इसको प्लंज करता है, और ये एक जैगेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, एक वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये सैंड जो है ना वो कंपैक्ट हो जाता है. तो आप एसपीटी टेस्ट बिफोर दैट टेस्ट सॉइल इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, और जब सॉइल इंप्रूवमेंट हो जाए उसके बाद भी कर लेते हैं. आपके पास सॉइल इंप्रूवमेंट जो है ना वो पता लग जाता है कि कितनी सॉइल इंप्रूवमेंट हुई है. इसकी एक वीडियो भी मैं आपको बताता हूं. ये देखें वाटर जेट है, पेनिट्रेशन हो गई है. ऊपर से जो होल आता है वो उसको भी ये कंपैक्शन भी हो रही है, ठीक है ना. देखिए सैंड कंपैक्ट हो रहा है, वाटर टेबल से नीचे भी, वाटर टेबल के ऊपर भी. इस तरह आप मुख्तलिफ स्पेसिंग पे ये यही प्रोसीजर रिपीट करते हैं. ये देखें यहाँ पे एक्चुअल वीडियो है इसी की. ये तो एनिमेशन थी ना, यहाँ पे आपके पास एक्चुअल वीडियो है.
वाइब्रो डिस्प्लेसमेंट, ये स्टिफर क्लेस, दिस इज यूज फॉर स्टिफर क्लेस। ये देखें इस तरह के बिल्कुल वही प्रॉब इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो कि देखें यहाँ पे ये क्लेस के लिए, तो क्लेस के लिए वाइब्रेशन से कोई कंपैक्शन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है एंड दैट होल इज फिल्ड विद ग्रेनुलर मटेरियल एंड दैट ग्रेनुलर मटेरियल इज फिल्ड like stone columns. Once this stone column is formed, ऊपर से आप देखें इसको मटेरियल डाल के इसको कंपैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। These are called stone columns. So इस तरह के a number of stone columns depend upon your design. You develop such stone columns, a number of them. तो आपके पास ये जो है ना सॉइल इंप्रूव हो जाती है इन स्टोर कॉलम्स की कंपैक्शन की वजह से। लेट मी शो यू एन एनिमेशन। ये हो गया, में भी हो गया, ये भी हो गया है, ये ये देखें, आप अगर बोर्ड से भी होल कर सकते हैं या आप ये प्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टोन कॉलम्स बन रहे हैं। दिस इज यूज्ड फॉर स्टिफ टू मीडियम स्टिफ क्लेस। डायनेमिक कंपैक्शन, ये सैंड के लिए इस्तेमाल होता है। डायनेमिक कंपैक्शन ये क्लेस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा हैमर आप गिराते हो फ्रॉम अ हाइट, हैमर वेट कैन रेंज फ्रॉम 6 to 20 tons एंड दे आर फ्री फॉलन फ्रॉम अ हाइट फ्रॉम एज लो एज 5 to as high as 20 मीटर, ठीक है। और ये डायनेमिक और इम्पैक्ट लोड की वजह से इसकी कंपैक्शन हो जाती है, ठीक है। डायनेमिक कंपैक्शन, इसकी भी मैं आपको एक सर ये क्या कर रहे हैं? ये आप नहीं देख रहे, ये सैंड है और ये डायनेमिक कंपैक्शन हो रही है। आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेस वेव जनरेट हो रहा है और ये देखें सैंड पार्टिकल्स, ये सैंड पार्टिकल देखें, इसको जैसे ही क्लोज होता जा रहा है, इसका मतलब है कि ये सैंड डेंस होती जा रही है। देखें जैसे ही कंपैक्शन आगे जाती है, यहाँ के पार्टिकल्स को क्लोज दिखाया गया है, देखिए। तो ये सैंड है, सैंड डिपॉजिट हो तो उसको आप डायनेमिक कंपैक्शन के जरिए इसको कंपैक्ट कर सकते हैं अप टू सर्टेन डेप्थ। अच्छा, मगर अगर ये आपके पास क्ले हो और सैचुरेटेड क्ले हो तो फिर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है
और वो जो है कंपैक्ट नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा, कहाँ पे है? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्री लोडिंग। आपके पास सॉफ्ट क्ले है, तो what do? You place some fill material load on the soft clay and leave it for months or years. तो क्या होता है, उस लोड की वजह से the water flows out of the soft clay and gets consolidated. Then when you are building the actual building, you remove the fill material and you place the structure on it. ठीक है ना? So that would lead to very less settlement under the building. This is called preloading. But disadvantage is this: you have to wait for maybe months and years before the actual construction of the building starts. ठीक है ना? All of this procedure follows a very rigorous calculation. How much load, ठीक है, how much time, how much settlement, सब जो है ना कि बैकग्राउंड कैलकुलेशन होती है, और वही थ्योरीज और वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है विच यू हैव ऑलरेडी स्टडी। ठीक है, टू एक्सेलरेट, मगर इसको एक्सेलरेट भी किया जा सकता है कि ईयर्स के बजाय मंथ्स पे आ जाए, मंथ्स के बजाय डेज पे आ जाए। उसके लिए वर्टिकल ड्रेन इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल ड्रेन्स क्या होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैं आपको बताऊं, इसके दो तरीके हैं। एक कहते हैं सैंड ड्रेन्स। ठीक है, सैंड ड्रेन्स क्या होता है कि आप देखें, ये आपके पास सॉफ्ट क्ले है, आपने यहाँ पे बोर होल कर दिए, a number of bore hole, and fill them with sand. Fill them with sand. The sand will provide some free draining boundary to the water in the soft clay. So when you apply the fill load, what happens? The water not only goes up and down, but they also move towards these vertical sand drains. And once it goes into this vertical sand drains, they are pumped up. They flow up and down. Okay? This will accelerate the whole process. Another way is to place PVDs. PVDs are prefabricated vertical drains. They are in form of stirrups, flexible stirrups. They are somehow embedded into the body of the soft clay like this, and they perform the purpose of sand drains. ठीक है, तो देखें ये water that move towards the sand drains flow up. They are collected in sub drains, and the sub drains flow into the main drain, and the water from the soft clay is removed, which leads to the consolidation and compression of the soft clay. Then the strength and stiffness characteristics of the soil is improved, and you can build structure on this. Let me show a video of these PVDs for you. Okay, let me show you something. Here, these are these PVDs or flexible strand. This is the machine that install these stirrups into the ground. You see, a number of stirrups, and here is a video of how they are installed.
Jet grouting is another technique. Jet grouting is a soil stabilization process whereby hydraulic drilling is used to reach the design depth at which the soil has to be stabilized. Then cement slurry is injected at a high velocity to form soil cement matrix. देखें ये मशीन है जो कि सीमेंट सैंड ग्राउट जो है ना एक हाई प्रेशर से इंजेक्ट करते हैं और इस सॉइल को इंप्रूव करते हैं. ठीक है. इसके अलावा शेलो डेप्थ की सॉइल इंप्रूवमेंट भी हो सकती है थ्रू एयर. In many cases where slab on grade construction is to be used, the most economic solution to increase the bearing capacity may be to use one of two things. Use soil cement with or without sand or fly ash filler. इसको सॉइल को मिक्स कर लेते हैं सीमेंट के साथ और सैंड और फ्लाई एश फिलर के साथ और इससे सॉइल को इंप्रूव कर लेते हैं. ठीक है ना. Depth to about 1.5 meter can be treated in this manner. Greater depth usually requires some alternative method. The required cement by weight is seldom over 5%. ठीक है. तो ये आपका soil improvement की different techniques हैं और with this your whole course is finished. मुबारक हो आपको. मुबारक. आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. कोई